last day we were talking about Natalia Stefanova and Lomov's encounter here. So we got to know that Oxen Meadows is the topic between these two, whereas both of them, Lomov actually came to propose to Natalia, but the conversation just sort of takes another round, and it goes into what? It just goes into the Oxen Meadows, like who is the actual what do you call that, owner of the Oxen Meadow. So we were in this page. Yeah, so we were in this page. I shall try to be brief. This page was done. Here we were. Natalia Stefanova said, now really wait just a minute. Means when they just started about the conversation. Right? They just started the conversation. Now here Lomov says, I can show you the documents, honored Natalia Stefanova. It is true, Oxen Meadows were once the subject of some dispute, but now everybody knows that they are mine. There is nothing to argue about. You see, my aunt's grandmother gave the free use of these meadows in perpetuity to the peasants of your father's grandfather in return for which they were to make bricks for her. The peasants belonging to your father's grandfather had the free use of meadows and had got into the habit of regarding them as their own. Then the fact they actually belong to. When in fact they actually belong to. So basically क्या हुआ था? I can show you the documents. लोमोव उसको बोलता है कि मैं आपको documents दिखा सकती हूँ. Honored Natalia Stefanova, it's true that Oxen Meadows were once in subject of some dispute. मतलब Oxen Meadows में कुछ dispute हुआ था, कुछ problem हुआ था. But now everybody knows, अभी सभी जानते हैं कि they are mine. यह है. There is nothing to argue about. इसमें argue करने की यहाँ पे ना कोई मतलब बहस करने की कोई चीज़ ही नहीं है. यू सी माई आंट्स ग्रैंड मदर, मतलब मेरे जो आंट थे उनके जो ग्रैंड मदर थे, दे गेव द फ्री यूज ऑफ दिस मीडोज इन परपेचुइटी. परपेचुइटी मीन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. परपेचुइटी टू द पीजेंट्स ऑफ फादर्स ग्रैंडफादर, मतलब आपके फादर के ग्रैंडफादर को मेरे चाची के जो ग्रैंड मदर हैं वो दिए थे. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. सो हियर द रिलेशनशिप इशूज़. ओके, मतलब लोमोव की जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी, मीन्स आंट्स ग्रैंड मदर, ओके, ग्रेट ग्रैंड मदर, उन्होंने वो ज़मीन ऑक्सन मीडोज दिया था. किसको? वो ऑक्सन मीडोज दिया था के फादर के ग्रैंडफादर को इन रिटर्न फॉर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर. और क्यों दिया था? ईट तैयार करने के लिए, ईट बनाने के लिए. ब्रिक्स मतलब ईट, ईटे. The peasants belonging to your father's grandfather had the free use of the meadows for 40 years. मतलब 40 साल तक वो यूज़ किए थे हम लोगों के meadows को. And had got into the habit of regarding them as their own. और मतलब ऐसे for a long time अगर आप किसी जगह पे रहो और for a long time अगर किसी चीज़ को यूज़ करो तो आपको वो एक habit हो जाता है कि वो आप उसको like ये आपके अपने बोलो, like it is your own. So that is what happened from Natalia's side. Who says this? Lomov says this. When in fact they actually belong to, but the main source or the main origin of Oxen Meadow is basically from Lomov. Understood this point? Now, Natalia Stefanova, what she says? You are wrong. Both my grandfather and grandfather reckoned that their land extended to Burnt Marsh, which means that Oxen Meadows were ours. There is no point in arguing. It is simply ridiculous. मतलब नटालिया अभी मानेगी ही नहीं कि वो ऑक्सन मीडोज बेसिकली लोमोव के थे. वो बोल रहे थे कि शी इज टेलिंग दैट बोथ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट मतलब माई ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर मीन्स ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर. ओके, सो ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर रेकन्ड दैट देयर लैंड एक्सटेंडेड टू बर्न्ट मार्श. बर्न्ट मार्श के पहले ही ऑक्सन मीडोज
होता है, मतलब आफ्टर burnt before burnt mash comes the oxen meadows, which means that oxen meadows were ours. There is no point in arguing and it is simply ridiculous. यहाँ पे argue करने की कोई चीज़ ही नहीं है, and this is absolutely funny that you are telling our land as yours. Now Lomov is saying, I have the papers, Natalia Stefanova. मेरे पास papers है, मेरे पास documents है. Natalia is saying, oh I see, you are just making fun of me. This is a big joke. We have had the land for nearly 300 years, and then suddenly you are telling that it is not ours. Ivan Vasilovich, I can hardly believe what you are saying. These meadows are not valuable. They only come to about 12 acres. But that's not, it is the unfairness. I can't stand unfairness. So Natalia is saying, मतलब नटालिया मान ही नहीं रही है कि वो ज़मीन ऑक्सन मीडोज एक्चुअली में लोमोव लोगों का है, वो स्टीफानोवा का नहीं है, नटालिया के फैमिली का नहीं है. वो अभी बोल रही है कि हम लोग सडनली वर टेलिंग कि जो लैंड हम लोग 300 ईयर्स से हम लोगों का है, सडनली वर टेलिंग दैट लैंड इज़ नॉट आवर्स. दिस इज़ समथिंग रिडिक्यूलस, दिस इज़ समथिंग फनी. आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस. हालांकि वो जो ज़मीन है उसका ज़्यादा नहीं है, वो जस्ट 12 एकर्स है, बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट. इट इज़ द अनफेयरनेस, मतलब ये अनफेयर है. दिस शुड नॉट बी डन. Now Lomov is saying, didn't you hear what I said? Your great-grandfather's peasants, as I have already had the honor of explaining to you, used to bake bricks for my aunt's grandmother. Now my aunt's grandmother, being a decent woman, who cares about all these grandfathers and grandmothers' business? The meadows are ours, and that's all is to it. Now look at mine. So Natalia is saying that I don't care about what the grandfather and the grandmothers did. It is ours, means it is ours. It is not yours. So Lomov says they are mine. Natalia again said ours. You can go on about it until you are blue in the face. And you can wear 15 dress jackets, but I tell you they are ours, ours, ours. I don't want anything that belongs to you, and I won't give up anything of mine, thank you very much. Lomov is saying, Natalia Stefanova, I don't care about the meadows, but I am acting on principle. If you like, I will give them to you as a gift. So Lomov is saying, see, I don't want to argue, I don't want to fight with you, but मैं नैतिक मतलब नीति, प्रिंसिपल्स मीन्स नीति, कुछ रूल्स रेगुलेशन, कुछ प्रॉपर मोरालिटी के बात है ये. इफ़ यू लाइक आई विल गिव देम टू यू एज अ गिफ्ट. अगर तुम्हें अच्छा इतना चाहिए मीडोज, ऑक्सन मीडोज, देन आई कैन गिव यू एज अ गिफ्ट. नाउ नटालिया स्टेफानोवा इज सेइंग, if there is any giving to do, I will do it because they are mine. I cannot believe your behavior. Up to this, we have always thought of you as good neighbor and friend. Last year, we lent you our threshing machine, which meant us putting off our own threshing till November. Now you treat us as if we were gypsies, giving me my own land, indeed. In my opinion, that's not at all neighborly. In fact, I think it's downright insulting. So Natalia मानेगी ही नहीं. Natalia is telling, no, it cannot happen. If there is any giving to do, अगर किसी को देना ही है तो वो मैं दूंगी. I will do it because they are mine and I cannot believe your behavior. मैं तुम्हारा जो ये behavior है मैं वो विश्वास ही नहीं कर सकती हूँ. अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट, हम लोग हमेशा सोचे हैं कि तुम एक अच्छे नेबर हो, अच्छे फ्रेंड हो. लास्ट ईयर हम लोगों ने हम लोगों का जो थ्रेशिंग मशीन है वो दिया था, जिसका मतलब ये है कि नवंबर तक हम लोगों को वेट करना. हम लोगों ने अपना थ्रेशिंग नहीं चलाए, तुम्हें दिया. नाउ यू ट्रीट अस एज इफ वी वर जिप्सीज. अभी तुम हम लोगों को ऐसे ट्रीट कर रहे हो. यू आर गिविंग अस आवर ओन लैंड. सो ऐसे द फाइट स्टिल गोज ऑन.